Bismillahirrahmanirrahim. Welcome everybody to the new lecture of medical microbiology. So today we are going to go through the topic of identification of fungi from various clinical samples. In medical microbiology, we have a lecture for fungal infections too, because human samples or human population have um, a lot of fungal infections. And the most recent one, if you remember, if you're looking at the news, a lot of COVID patients that are dying in India because of a black fungus, what they call it as, or dark fungus. It's a hospital-acquired infection. And normally, once the body is strong and it has a good immune system, these fungi do not create a lot of problems. So body can handle them pretty well. But as soon as you go under the immunocompromise or immunosuppression, when your body is under did the effect of some disease or some drugs, just like the COVID patients, they are being given a lot of steroids or corticosteroids to control their immune system because they are dying because of cytokine storm and they are critically ill and having difficulty in respiration. So that those corticosteroids or uh, immunosuppressants are basically um, giving opportunity to secondary infections to give a very strong hold. So right now, that infection, if you've seen the cases, the infection of the dead dark fungus that goes from the blood and then it grows in the nose and respiratory tract as well as behind the eye. So a lot of COVID patients, they are removing the eyes of the patient. The enucleation is going on. So it's a very scary stage in which the fungus have uh, taken control of the fate of the COVID patients, and you're fighting with the virus, but the fungus itself is jumping in because of the immunosuppression. So there are various types of fungi which are present in the which are infecting. So here you have a figure on the left hand side top of a slide of a different types of fungi which are present in the world. They may have some hyphae or they have some spores which are there. This one is a figure of aspergillus sort of a fungi which have a lot of spores. On a slide, on a plate, if you are growing it on an agar, the fungal colonies look something like this. They have filaments and they are very easy to identify that there is fungal spores growing on it. What are the medically important fungi? We don't need to go through a whole list of fungi to understand, but what I would like to teach you guys is to focus on two of the most commonly um, treated or most widespread fungi which are affecting humans. So that one is called as the first one is called as Aspergillus, which is there, and the other one is called as Candida albicans. ये दो जो हैं ये बहुत प्रॉब्लम करते हैं. Aspergillus itself attacks the respiratory tract and brain. The disease is called as aspergillosis, and we can identify it from the sputum and the tissues of the patient जहाँ पे ज़्यादा infection हुई हो. As well as the Candida albicans is a sort of a budding yeast. It is a part of a normal microbiota. थोड़ी सी amount में Candida won't say anything. It is normally moving around, but it can cause severe uh, problem in the female, which is vaginitis, and it, as well as a condition which is called as thrush that can happen. So the sample that can be taken could be either from the throat swab or a vaginal swab to identify these Candida albicans infections. So let's talk about quickly about Aspergillus itself. It is a spore-forming fungi. If you look at the diagram of the Aspergillus, it has hyphae, it has conidospores, it has small vesicles or fungal spores which are matured and dispersed around in the environment. If you look at closer stained image, the fungal hyphae of the Aspergillus look like this, and the colonies on the specific agar, अगर वो grow कर रही हो तो Aspergillus fumigatus की इस तरह की होगी, Aspergillus flavus की ऐसी होगी, Aspergillus terrace की थोड़ी सी brown से कलर की होगी, Aspergillus niger की थोड़ी सी it will be a bit darker, dark brown or black color की होगी. Different species के नाम है, खैर पिछली slide पे भी आपने देख ली थी, but there are specific names which are Aspergillus fumigatus is most common one, Niger flavus
nidulans and clavins are more type of aspergillus that you can find. Laboratory diagnosis of Aspergillus fumigatus, which is the most common one, could include the sputum. जो पेशेंट की थूक है वो पता लगेगी. बहुत सारे ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट्स को भी ये हो जाता है, कोविड के पेशेंट्स को भी हो जाता है. A lot of what you call it as पेशेंट्स ऑफ HIV, जो कि एड्स जिनको हुई होती है, उनका इम्यून सिस्टम भी शट डाउन हुआ होता है, उनको भी बहुत ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन होती हैं. एंड नाउ द कोविड पेशेंट्स आर गेटिंग द फंगल इन्फेक्शन. सो इट कैन बी स्पूटम, इट कैन बी ब्रोंकियल वॉश जो रेस्पिरेटरी ट्रैक से होगा. ट्रेकियल एस्पिरेट्स कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम पेशेंट्स एंड पल्मोनरी डिजीजेस. थोड़ा मुश्किल होता है ट्रेकियल वॉश एंड ब्रोंकियल वॉशेस लेना, बट लेकिन जब पेशेंट बहुत डाउन चला जाए और आपको एंटीबायोटिक से ट्रीटमेंट ना मिल रहा हो एंड यू वोंट बी एबल टू ट्रीट इट विद एंटीबायोटिक्स, सो द डॉक्टर ऑर्डर्स स्पेसिफिक टेस्ट फॉर फंगाई, और ताकि उसका पता लगे कि कौन सी इन्फेक्शन है, फिर उसके हिसाब से उसको एंटी फंगल्स देकर से ठीक करें. और टिश्यू बायोप्सीज कैन ऑल्सो बी टेकन फ्रॉम द पेशेंट्स. जिनको ज़्यादा इन्फेक्शन, लंबी चौड़ी इन्फेक्शन होती है, उनके टिश्यू बायोप्सी भी ले सकते हैं. व्हाट आर द मेथड्स फॉर, इजी मेथड्स फॉर detecting it in the lab? So when you're working in the lab, direct microscopy is performed, and the direct microscopy is linked with the um, utilization of potassium hydroxide KOH wet mount. और आप sputum sample lavage और biopsies को आप KOH से wet mount करेंगे. What you can see is you can see the non-pigmented septi. ये वाले जो हैं अंदर से hollow होते हैं, इनको stain नहीं होता, इनको septi कहते हैं या hyphae कहते हैं, septate hyphae, ये आपको मिलेंगे. और you can also found some branching, ये आगे जाके divide हो रहे हैं और उनकी different arbitrary सी branching है. You can the KOH test will have specific functionalities. It allows you for rapid observation of fungal elements. जो ये आपको पीछे नजर आ रहा है ना, आपको फटाफट नजर आने शुरू हो जाएंगे. The KOH, as the name indicates, is potassium hydroxide. Basically, the potassium hydroxide digests the protein debris and the skin tissues जो कि वहाँ पे keratinized होते हैं, उनको digest करके तो उसमें से जो fungal spores हैं, hyphae, उनको बाहर निकालते हैं. So it has a sort of an effect of digestion. There are several factors जो कि इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन नज़र नहीं आती है. कि अगर आपको स्किन पे नज़र नहीं आ रही तो स्किन के नीचे होगी. सो सैम्पलिंग शुड बी डन बाय फिजिशियन. आम बंदे से या टेक्नीशियन से सैम्पलिंग नहीं करानी है. यू हैव टू आस्क द फिजिशियन टू डू द सैम्पलिंग. और उसमें बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर को पता हो कि टेस्टिंग साइट क्या है, कि कहाँ किस जगह पे फंगस ज़्यादा मिलेगा, उसकी साइट और उसका सैम्पल साइज़, कि क्या साइज़ उसका क्या होना चाहिए. ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. और रैपिड स्क्रीनिंग ऑफ स्पेसिमेन जो है वो बहुत ज़रूरी है, कि अगर आप देर लगा देंगे, उसको ग्रो करना शुरू हो जाएंगे या उस पर लंबा चौड़ा को टेस्ट लगा देंगे, तो द पेशेंट, द इन्फेक्शन इज स्प्रेडिंग वेरी फास्ट. यू हैव टू स्टॉप इट. सुपरफिशियल माइकोसिस को कहाँ कहाँ पे होगा, उसको कैसे निकालेंगे? सुपरफिशियल माइकोसिस का मतलब है जो कि स्किन आपकी लैब में मिलती है, ग्लास स्लाइड से उसको आप कर सकते हैं. इज देयर एनी क्वेश्चन? सर केओएच टेस्ट में जो आपने सेकंड पॉइंट बताया वो प्लीज रिपीट कर दे. इससे पिछली जो स्लाइड थी. द सेकंड पॉइंट इज दैट जो डाइजेस्ट करने वाला जी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हैज अ हाइड्रोलिसिस प्रॉपर्टीज. अदर में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विल हेल्प यू. जब आप स्किन के ऊपर से सैंपल लेंगे ना, तो उसमें स्किन के सेल्स और स्किन की एपिथेलियम भी ज़्यादा सारी आएगी, और यू वोंट बी एबल टू सी द फंगल हाइफी. अगर वहाँ पे स्किन के सेल्स जो स्क्रैपिंग आप करते हैं ना हाथ के ऊपर या उंगलियों पे, नाखूनों में लगा होता है, तो वो आपको नज़र नहीं आएगा. KOH विल डाइजेस्ट एंड सेपरेट द सेल्स एंड द जो सेलुलर प्रोटीन है उनको ब्रेक डाउन करके दूर दूर कर देगा, तो आपको उसके अंदर जो इन्फेक्शन छुपी हुई ना वो नज़र ज़्यादा इजीली आ जाएगी. तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हैज़ मोर ऑफ अ डाइजेस्टिंग इफेक्ट फॉर ब्रेकिंग डाउन द प्रोटीन्स जो कि सैंपल में साथ आती हैं. उसकी ज़रूरत क्या होती है, यहाँ से आपको पता लगेगा.
वंस यू लुक एट द सैम्पलिंग साइट्स, अगर आप स्किन से ले रहे हैं, स्किन स्क्रैपिंग आप करेंगे, उसको लेबॉर्ट्री में सेंड करेंगे, तो वहाँ पे आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे। हेयर के सैंपल आप ले सकते हैं, यू कैन प्लग द हेयर्स यूजिंग अ फोर्सेप, और यू कैन प्लग इट यूजिंग अ स्कैल्पल। दोनों तरीके से आप उसको कलेक्ट कर सकते हैं, और उससे आपको पता लग जाएगा कि इसमें क्या चेंजेस आ रही हैं। बाज़ दफ़ा नाखूनों के नीचे फंगल इन्फेक्शन हो जाती है। यू माइट हैव सीन जो ब्रिटल नाखून हो जाते हैं, दे आर ब्रेकिंग वेरी इजीली, देयर इज सम वाइट स्टफ अंडरनीथ द नेल्स, दैट इज आल्सो फंगल इन्फेक्शन। एंड एनी डैमेज डिसकलर्ड और ब्रिटल नेल शुड बी सैम्पल्ड इन इट्स फुल थिकनेस। उसको काट के उसका पूरा का पूरा पोर्शन जो है वो साथ भेजना है, and then they will perform the processing to take the fungus out of it to identify कि कौन सा fungus है। Sometimes superficial mycosis can also occur on the mucous membrane, and you can perform the scrapings from the mouth अगर मुंह के करीब हुआ है, or from the female genital tract with the vagina where the fungal mycosis is there, and you can swab the whole area and send it immediately for the fungal diagnosis कि उसको आप पता कराएं कि वो है क्या। देर समटाइम्स देर इज अ सबक्यूटेनियस मैकोसिस जो कि आपको स्किन के ऊपर नजर नहीं आ रहा। द अपर स्किन इज सॉर्ट ऑफ इंटैक्ट, बट उसके नीचे कोई चीज़ ग्रो कर रही है और आपको पता लग रहा है कि द स्किन इज पेल एंड द स्किन इज बीइंग गोइंग डेड ऑन द सरफेस। उसे scraping and the crust can be done using a microscopy, and then you can also perform the bacterial contamination can also be a problem जहाँ पे फंगस ग्रो कर रहा होगा है, और वहाँ पे सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी हो सकती हैं। तो व्हाट यू वांट टू डू इज यू वांट टू क्लीन द साइट विद 70% subcutaneous region. What is what is the next point is that you have पस सैंपल जो कि आपने एस्पिरेट कर सकते हैं। समटाइम्स आपको पस का सैंपल मिल रहा होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भरी होती है और उसके अंदर भी जो है वो फंगल इन्फेक्शन साथ मिली हुई है। तो यू विल हैव टू जो एब्सेस है उसको सरिंज से एस्पिरेट करके डॉक्टर जो है वो सेंड करेगा, और आप उस एब्सेस को जो पस मटेरियल उसको प्रोसेस करेंगे, and then it should be biopsy samples should be transported to laboratory in a sterile container। आप उसको sterile container में ट्रांसपोर्ट करेंगे हमेशा। प्री पस उसकी उसकी जो सैंपल की प्रोसेसिंग है वो कैसे करनी है, हाउ विल यू परफॉर्म द प्रोसेसिंग ऑफ द स्पेसिमेन। number first is who is authorized to collect the specimen. It depends upon the type of specimen. If it is a skin scraping or nail removal या पस में से निकालना है तो वो कोई भी निकाल सकता है, but if that processing is linked to the mucosal site, so then authorized physician or a gynecologist will perform the specimen collection. Quantity of the specimen, it also depends upon the type. If it's skin scraping, you don't need a lot of it. Hair sample आप थोड़े से काट के भेज सकते हैं। जो mucosal scraping है that you cannot perform extensive, otherwise it will bleed, but you have to check कि आप अगर नाखून काट के भेजें तो you only require a corner, you do not take the whole nail off। तो जितना सैंपल जिस टाइप का है उसके हिसाब से आप उसको एडजस्ट करेंगे कि कितना चाहिए होगा। व्हाट इज़ द टाइम लैप्स ऑफ प्रोसेसिंग, अगर आपको सैंपल सुबह आया है तो आप उसको अगले दिन के लिए ना रखें। ट्राई टू प्रिवेंट द ओवरग्रोथ, और सैंपल को फटाफट प्रोसेस करना है अगर आपकी लैब में आया। बट इन केस इफ़ यू वांट टू स्टोर इट फॉर ट्रांसपोर्ट, ट्राई टू स्टोर इट एट एन एम्बिएंट रूम टेम्परेचर। बहुत हॉट टेम्परेचर पे या बहुत कोल्ड पे नहीं रखना, अदरवाइज यू विल लूज द ओरिजिनल सैंपल जो उसके अंदर आपने इन्फेक्शन ढूंढनी है। सैंपल को प्रोसेस कैसे करना है, यू रिक्वायर एन इक्विपमेंट रिलेटेड टू scalpel, you require scissors, you require sometimes you require nichrome wires and holders to cut the nail जो कि टूटा हुआ है वहाँ से, and you also require microscopic slides and cover slips। ये सारी चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। You also require 20% potassium hydroxide solution। जो potassium hydroxide solution है that you require, you will prepare by adding 2 grams of potassium hydroxide in 10 ml of deionized water, and then you will make a solution and use it। Sometimes you require 70% alcohol to clean the surface before you start scraping, तो वो भी आप prepare कर सकते हैं।
what are the methods which are there? मैं आपको quickly दो मेथड बताऊंगा, इसके मेथड और भी हैं, लेकिन the most commonly used method is called as slide method, जो कि आपने स्लाइड के ऊपर स्किन को स्क्रैप करके उसको अपने रखना है, उसके ऊपर कवर स्लिप लगानी है, उसको स्टेन करना है और देख लेना है। तो यू प्लेस द स्पेसिमेन, जो कि एपिडर्मल स्केल्स हैं, जो स्किन की जो आपने स्क्रैप किया हुआ है, बाल हैं, नेल है, हेयर है या स्क्रैपिंग है, उनको आपने क्लीन ग्लास स्लाइड पे रखना है। यू हैव टू पोर एट अ ड्रॉप ऑफ 10% KOH ऑन द स्पेसिमेन। आपने डाल लिया, उसके बाद आप उसको जेंटली जो है वो लूप के साथ या कवर स्लिप के साथ आप उसको ब्रेक करेंगे, स्किन के जो टिश्यूज हैं छोटे छोटे उनको सेपरेट कर लेंगे, एंड देन यू हैव टू हीट द स्लाइड जेंटली ओवर द फ्लेम। फिर आप उसको थोड़ी देर के लिए आप गर्म करेंगे, सो दैट द ब्रेक डाउन इफेक्ट ऑफ KOH टेक्स इट्स फुल इफेक्ट, and then you have to leave the slide for 5 to 10 minutes on a petri plate or on a dish. आप उसको छोड़ के तो उसके बाद जो है ना वो आप उसको एग्जामिन करेंगे अंडर 10x एंड 40x ऑब्जेक्टिव, दोनों पे आपने उसको देखना है। KOH मेथड आपको इस तरह नजर आएगा। नंबर फर्स्ट इज यू पुट अ skin scraping on the slide, you add the KOH, then you break it down using a forceps or the cover slip, आप उसको थोड़ा थोड़ा ब्रेक करेंगे और फिर उसके बाद आप उसको स्लाइड पे देखेंगे तो आपको इस तरह की फंगल हाइफी नज़र आएंगे, जो ब्रांचेस ग्रो हुई हुई हैं और सारे फंगस की जो लॉन्ग ब्रांचेस हैं वो आपको नजर आएंगी, तो आपको पता लगेगा इसको फंगल इन्फेक्शन है। दूसरा मेथड, एक होता है ट्यूब मेथड और एक होता है द अदर मेथड इज कॉल्ड एज ट्यूब। पहला वाला क्या था, स्लाइड मेथड, और ये है ट्यूब मेथड। अब ट्यूब मेथड जो है वो इट्स इज अ स्पेसिफिक मेथड जो कि आप स्किन बायोप्सीज पे या नेल क्लिपिंग पे करते हैं। आपने काफ़ी बड़ा सा नाखून का पीस काट लिया जिसके नीचे इन्फेक्शन थी, तो उसको आप डिजोल्व करने में टाइम लगेगा। या अगर आपके पास टिश्यू का सैंपल आ गया है, फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ होल चंक ऑफ स्किन विच इज़ देयर और एन ऑर्गन जो कि जिसकी बायोप्सी हुई है, तो आप उसको 10% KOH में ओवरनाइट 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखेंगे, और देन यू विल टेक द सस्पेंशन, उसको मिक्स करके उसका फ्लूइड लेके उसको क्लीन स्लाइड पे रखे, ऑब्जर्व करेंगे 10x और 40x पे। ओवरनाइट रखने का मकसद क्या है, सो दैट द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एट 37 इट कैन पेनिट्रेट द सैंपल एंड ब्रेक इट डाउन मोर एज कम्पेयर टू आप क्विकली उसको जो स्लाइड पे ऊपर करते हैं उससे ज़्यादा ये थोड़ा होगा। नेक्स्ट स्टेप इज के आपने स्लाइड पे तो देख लिया, लेकिन आप उसको एक ख़ास मीडिया होता है, द मीडिया विच इज़ कॉल्ड एज सेब्रॉड्स डेक्सट्रोज एगर, SDA, जिसके ऊपर जो है वो एस्परजिलस की जो ग्रोथ है वो बड़ी फास्ट आती है, और आपको जो उसकी कॉलोनीज मिलेंगी वो वाइट, येलो, येलो ब्राउन, ब्राउन टू ब्लैक और ग्रीन इन कलर, क्योंकि पता है एस्परजिलस 4-5 टाइप्स का होता है, तो कोई भी टाइप आ सकती है, उसकी कॉलोनी से आपको देख के पता लग जाएगा। माइक्रोस्कोपिकली you can see the colonies under the slide or under the microscope, and you will see radiating chains of conidia, जो आपको दिखाया था ना शुरू में, उसकी ये ब्रांचेस जो आ रही थी स्लाइड के ऊपर, कल्चर प्लेट के ऊपर इस तरह की बड़ी बड़ी कॉलोनीज आएंगी, और माइक्रोस्कोप के नीचे आपको उसकी ये ब्रांचेस और उसके आगे इसके छोटे छोटे जो स्पोर्स निकले हुए ये आपको नजर आएंगे, विच आर टिपिकल ऑफ एस्परजिलस इन्फेक्शन। देख लिया कि इसको कैसे नजर आ रहा है। यू कैन ऑल्सो लुक फॉर aspergillus by detecting the antigen using some specific serums, जो उसका थोड़ा सा immunological test हो जाएगा। uh, several antigen tests are for detection of aspergillus from blood, urine and cerebrospinal fluid। जिस बंदे को हुआ होता है और उस बंदे में हाई लेवल्स ऑफ गैलेक्टोमेनिन एंटीजन होती है, जो कि विच इज़ fungal protein which is secreted rapidly uh, from the from the aspergillus during the infection in the blood। जब उसमें ब्लड में जाके ग्रो करता है और फैलता है तो ये ग्लैक्टोमेनाइन बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो आप ग्लैक्टोमेनाइन की जो है ना वो सीरोलॉजी कर सकते हैं, एंड यू कैन परफॉर्म द इम्यूनो डिफ्यूजन टेस्ट उसको चेक करने के लिए, और पेशेंट विद एलर्जिक एस्थमास कैन ऑल्सो गेट देयर स्पेसिफिक IgG एंड IgE लेवल चेक्ड अगेंस्ट द एस्परजिलस, तो उनको स्पेसिफिक एंटीबॉडी टेस्ट करेंगे तो उनको पता लग जाएगा कि इसको एलर्जी जो है वो फंगल स्पोर से है। ये तो एस्परजिलस की बात होगी। दूसरा जो सबसे ज़्यादा कॉमन फंगल इन्फेक्शन है इन ह्यूमन पेशेंट्स इन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, दैट इज लिंक्ड टू कैंडिडा एल्बिकन्स, और कैंडिडा एल्बिकन्स इज कैन बी फाउंड इन 3 forms। इट कैन बी फाउंड इन द फॉर्म ऑफ बर्डिंग yeast, it can form pseudo hyphae like this, and it can form
स्पेशल प्रोलॉन्ग ट्यूब्स विच आर इनफैक्ट हाइफी, तो आपको इसको बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करना पड़ेगा। नॉर्मल हैबिटेट ऑफ कैंडिडा, क्योंकि मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में कि ये नॉर्मल म्यूकस मेम्ब्रेन्स में भी होता है, बड़ी थोड़ी क्वांटिटी में। ऑफ ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन द गट, विजाइना एंड द सर्फेस ऑफ द स्किन। यहाँ पे छोटी क्वांटिटी में हर वक्त इसके कैंडिडा के स्पोर्स हर वक्त होते हैं, बट दे आर नॉट कॉजिंग एनी हार्म टू द बॉडी। They are also found in the digestive tract of bird. As Candida can be isolated from the soil, animals, and hospitals and objects. So it's a worldwide fungal infection which is present everywhere. अब कैंडिडा की इन्फेक्शन जो है वो किसी एक जगह पे नहीं होती है, इट कैन गो टू एनीवेयर इन द बॉडी। जब आपकी बॉडी का इम्यून शटडाउन होगा या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होगी, दिस कैंडिडा विल हैव its growth almost everywhere, and you can see the kind of diseases that it cause. It can cause the oral candidiasis, which is मुंह के करीब white white हो जाता है। I cannot really show you the pictures because they are a little gross. So just अगर आपने देखा होगा बाज़ लोगों के होंठों के कॉर्नर पे इन्फेक्शन होती है और वो वाइट वाइट हो जाता है। जस्ट इमेजिन दोस थिंग, डेंचर रिलेटेड ओरल स्टोमाटाइटिस हो जाता है। बाज़ लोग सम ऑफ द टीनेजर्स दे आर वेयरिंग the braces जिनको कहते हैं, which is also called denture in the US. उस denture की वजह से वहाँ पे जो है ना fungal infection grow कर सकती है। You can have angular cheilitis, which is the inflammation of the both corners of the mouth. जो मुंह के किनारे हैं यहाँ पर infection हो जाती है। There is a thing which is called as median rhomboid glossitis, which is the redness of the tongue. उस पर lingual papillae के ऊपर, tongue के ऊपर बहुत ज़्यादा infection हो जाती है fungal की। And then it can also cause vulvovaginitis, which is the white lesions on the epithelial surfaces of the genital tract, the female genital tract, which involves all three locations of the external genitalia, internal genitalia, as well as the cervix, which is right outside the uterus of the female genital tract. It can also cause the infection of the male genital tract, which is named as balanitis, which is the infection of the glans penis, which is the tip of the penis. It can have at the base of the tip of the penis, it can cause really bad infection of the mucosal candidiasis. Sometimes the infection can also spread to esophageal tract, and it can cause the infection of the esophagus, causing the painful swelling. जो इम्यूनोसप्रेसिव पेशेंट्स होते हैं HIV के और वायरल इन्फेक्शंस के, उनमें जो इन्फेक्शन है फंगल इन्फेक्शन, इट कैन स्प्रेड टू ऑल ओवर द बॉडी। ये तो था म्यूकोजल कैंडिडियासिस जो ऊपर दिखाया था। ये है कुटेनियस कैंडिडियासिस जो कि स्किन के ऊपर होता है। दीज वंस आर आल्सो वेरी नेस्टी इन्फेक्शंस ऑन द स्किन, और जिसमें मोस्ट कॉमन इज कैंडिडा फॉलिकुलाइटिस, जो कि आपके सर के बाल गिरने शुरू हो जाते हैं, एंड द रैश में अपीयर्स एज पिंपल, सर में पिंपल निकलने शुरू हो जाएंगे, और वेरी क्विक हेयर लॉस कुड बी देयर, and then the doctor will give you some antifungal shampoos to clear that infection to get your hairs back. Sometimes the candidal infection can become uh, in between the folds of the adjacent skins. Some of the patients who are overweight, बहुत मोटे होते हैं, तो they have many folds in the skin of the belly and of the trunk, and in between the skin, which is the fold of the skin, there is humidity and there is very high moisture is there due to sweating. वहाँ पर जो फोल्ड होते हैं वहाँ के अंदर इन्फेक्शन हो जाती है, जिसको कहते हैं कैंडिडियल इंट्रागो। और उसके बाद कैंडिडा की इन्फेक्शन नेल फोल्ड्स में भी हो सकती है, पैर के नाखून में, बड़े नाखूनों में कैंडिडियल पेरी ओंकिया हो जाता है, विच इज़ द कॉर्नर्स ऑफ द नेल बेड के साथ। Some of the patients can also get the perianal candidiasis, which is the irritation of the external part of the rectum. ये बॉडी का इम्यून सिस्टम मजीद शट डाउन हो जाएगा इस इन्फेक्शन से। समटाइम्स देयर इज अ कंजेनिटल क्यूटेनियस कैंडिडियासिस, जो कि प्रीमेच्योर बेबीज होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम अभी प्रॉपर नहीं हुआ होता। व्हेन दे आर बोर्न फ्रॉम अ बर्थ कैनाल, like they're born from vaginal delivery from a mother which is infected with the candida albicans, उसको फंगल इन्फेक्शन हुई हुई जेनिटल ट्रैक्ट की, और वहाँ से बच्चा पैदा हुआ है, तो उस बच्चे को पैदा होते साथ ही स्किन के ऊपर कुटेनियस कैंडिडियासिस होगी, और that kid will suffer. And then there is a very high chance of diaper candidiasis. जिन बच्चों को prolonged डायपर लगते हैं या वो पैम्पर लगा के फिरते हैं, तो उनकी भी नैपी रैश जो आपने देखा होगा,
that nappy rash can get infected with fungal infections and get complicated. Sometimes it can happen interdigitalis, in between the fingers. फंगल इन्फेक्शन हो जाती है उंगलियों के बीच में, पैर की उंगलियों के बीच में. आपने देखा होगा बाज़ लोगों की इन्फेक्शन होती है, वो ख़त्म नहीं होती. दैट इज़ बेसिकली नॉट द बैक्टीरियल इन्फेक्शन. वो एंटीबायोटिक खाते रहते हैं और वो ट्रीट नहीं होता, बिकॉज इट्स अ फंगल इन्फेक्शन देयर. Onychomycosis is an also candidal form is there, which is a nail infection is there. अच्छा, म्यूकोजल देख ली हमने. कैंडिडियासिस वी हैव सीन the cutaneous one. There is a much more dangerous one which is called as systemic candidiasis. Systemic candidiasis is when the fungal infection is traveling in the blood of the patient and all over the body. So that can cause that can lead to sepsis, that can lead to disseminated candidiasis in other organs, that can lead to endocarditis. हार्ट के वॉल्व्स के ऊपर प्रॉब्लम हो जाएगी. जीआईटी ट्रैक में हो सकती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में, जेनेटोयूरिनल ट्रैक में, हेपेटोस्प्लेनिक ट्रैक में. सो नेम द ऑर्गन. अगर बॉडी का इम्यून सिस्टम मरा हुआ है या कॉम्प्रोमाइज्ड है, द कैंडिडा इन्फेक्शन कैन गो टू एवरीवेयर. एंड द नेक्स्ट वन इज लैब डायग्नोसिस. आप इसको डायग्नोस कैसे करेंगे? लैब डायग्नोसिस ऑफ कैंडिडा एल्बिकन्स इज लिंक्ड टू the specimens like exudates, tissues and scrapings. इन तीनों चीज़ों को आप देख सकते हैं. और माइक्रोस्कोपिक की स्क्रैपिंग देख सकते हैं. माइक्रोस्कोपिक स्क्रैपिंग कैन बी परफॉर्म्ड बाय द वेट फिल्म. आप इसको जो KOH वाला हमने फार्मूला दिखाया था ना, वो इस पर भी लगता है. आप उसको 10% KOH में डाल के निकाल लेंगे. बट जो कैंडिडा के हाइफे हैं उनको कहते हैं सूडो हाइफे, एंड दे आर बडिंग यीस्ट सेल्स. एस्परजिलस के डिफरेंट थे. कैंडिडा के इस तरह की छोटे छोटे बर्ड्स होंगे और इसमें उस तरह की स्पोर्स ही नजर आएंगे जिस तरह के आपको एस्परजिलस में नजर आते हैं. एंड देन देर आर कैंडिडा को स्टेन भी कर सकते हैं. कैंडिडा कैन उसकी जो हाइफी हैं, जो छोटे स्पोर्स हैं, they can stain as gram positive. If you do a gram positive stain, you can also perform some stains which is called as a silver stain, जिससे आपको कैंडिडा के स्पोर्स इस तरह के नजर आएंगे ब्लैक कलर के, बिकॉज इट्स अ सिल्वर स्टेन. एंड देयर इज अनदर स्टेन विच इज कॉल्ड एज पीरियोडिक एसिड शिफ्ट स्टेन, जिसके अंदर आपको फंगल स्पोर्स जो हैं वो इन बिटवीन द टिश्यू सैंपल आपको नजर आएंगे. हियर यू कैन सी दिस स्मॉल राउंड स्ट्रक्चर्स विच आर द हाइफी और स्मॉल कैंडिडा स्पोर्स जो कि आपको नजर आएंगे. सो जिस लैब में आप काम कर रहे हैं या जिस भी लैब में आप सैंपल सेंड करेंगे, तो उनके पास स्पेसिफिक टेक्निक्स होती हैं. Some labs may do the silver stain, some labs may do the periodic acid shift stain. कुछ लैब जो हैं वो 10% KOH में रख के सिर्फ इसको डायरेक्टली देख के बगैर स्टेनिंग के भी आपको बता सकती हैं कि ये कैंडिडा है. If you start growing it on the सेब्रॉड्स डेक्स्ट्रोज एगर, आपको क्रीमी वाइट कॉलोनीज आएंगी स्मूथ कलर की, इस तरह की आपको नजर आएंगी, विच आर क्रीमी पेस्टी कॉलोनीज एंड दे स्मेल लाइक यीस्ट. आपको अगर इंक्यूबेटर में सूंघेंगे तो आपको यीस्ट की स्मेल आनी शुरू हो जाएगी. And if you grow it on the chrome agar, there is another agar, chrome agar, जिसके ऊपर Candida albicans will form the green colony, greenish colony नजर आएंगे आप. If you grow it on the blood agar, अगर आपने उसको enriched agar पे grow करना है, on the blood agar you will see white creamy colored colonies and with the foot-like extensions from the margin. आपको इसके अगर आप गौर से देखें, I hope you are getting the clear picture. White colony के साथ यूँ छोटे-छोटे filaments निकले हुए हैं जो कि like a foot-like structure which are extending फ्रॉम द कॉलोनी. तो आपको ये भी कैंडिडा एल्बिकन्स की टिपिकल कॉलोनी पता लगेगी. कैंडिडा एल्बिकन्स का एक और टेस्ट होता है जिसको कहते हैं जर्म ट्यूब टेस्ट. इट इज़ यूजुअली परफॉर्म्ड इन द रिसर्च वर्क, नॉट इन द रूटीन टेस्ट. बट द जर्म ट्यूब टेस्ट इज दैट व्हेन यू ग्रो द कैंडिडा फॉर 2 hours with the human serum at 37 degrees centigrade, they will form from mother cell, they will form a budding daughter cell and they will form a germ tube, a tube just like this, which is typical of Candida albicans only. तो germ tube test कर सकते हैं आप. उसके कुछ biochemical test भी कर सकते हैं. You can perform the glucose and maltose fermentation of the Candida albicans, and it will ferment the glucose and maltose with the production of acid and gas. But it will not ferment the sucrose and lactose. ये दो नहीं करेंगे. और अगर आप उसको टेट्राजोलियम रिडक्शन टेस्ट करेंगे तो उस पर पेल पिंक कलरेशन आएगी. सो देयर आर सम स्पेसिफिक टेस्ट जो कि आप करते हैं. हर लैब सारे टेस्ट नहीं करती है. डोंट बॉदर अबाउट कि आपने कैंडिडा को ढूंढने के लिए आपने स्टेनिंग भी करनी है, बायोकेमिकल टेस्ट भी करने हैं, सीरोलॉजी भी करनी है.
majority of these tests could be used in case of an outbreak. अगर किसी शहर में या किसी मोहल्ले में या किसी हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा फंगल आउटब्रेक आ गई है, तो फिर आप वो सारे टेस्ट करके उसको कंफर्म करेंगे। रूटीन टेस्ट में सिर्फ KOH का टेस्ट करके उसकी फंगाई की जो शेप है वो देख के बता देंगे कि ये कौन सा लग रहा है। इसको आगे आप डॉक्टर जो है वो उसका आगे उसको ट्रीटमेंट दे देंगे, एंटी फंगल क्रीम है, टैबलेट्स हैं, उससे वो ठीक हो जाएगा। सीरोलॉजी जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, सीरम में एंटीबॉडीज़ होती हैं कैंडिडा एल्बिकन्स के अगेंस्ट, और आप उसको एलाइजा से चेक कर सकते हैं और रेडियो अमीनो एसिड से चेक कर सकते हैं। दोनों के दोनों जो है वो अवेलेबल हैं कमर्शली, और you can perform it. There is another test which can be performed in the research lab, which is called as 1,3 beta D glucon assay. ये भी जो है वो in the cell wall of the fungi this particular glucan is present, and that can be detected using a specific assays which are available commercially. Initially, finally, there can be some molecular tests like DNA probe or PCR test can also be performed to finally detect not the parasite, sorry, the fungi which is infecting the body. So if you have any questions, you can ask me right now. I will be very happy to respond to you guys. But in case if you have any questions while going through the lecture or the slides, you can drop me an email and I will reply to you as early as possible. So if you don't have any questions, kindly mark your attendance in the chat box on the right hand side, and you can leave. Thank you very much for your time and attention.
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। और अभी क्या आपका मैसेज मिला था, सॉरी मैं कॉल नहीं अटेंड कर सका, मैं क्लास पढ़ा रहा था ऑनलाइन अभी। एक्सीलेंट जी, बिल्कुल मैं इंशाल्लाह हाजिर हो जाऊँगा, बिल्कुल ज़रूर। शुक्रिया जी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।